Hello everyone, this is Pritam Shah and welcome to my YouTube channel Cognitive Coders. So today in this video we'll see one another real-time scenario that is based on count. Okay, so basically we have few files, few CSV files or any kind of pocket files, any kind of files. We need to get the count of data from that file. Each and every file we need to get the single count. Okay, so that thing how we will do, and that we will see here. Okay, तो बेसिकली हम लोगों के पास अपना डेटाबेस फाइल सिस्टम और एनी काइंड ऑफ storage. Here I am only using database file system, but if you are using Azure, then कोई भी blob storage, कोई भी database file system हो, सॉरी कोई भी डेटा लेक जेन 2 हो, डेटा लेक से और कोई भी जगह से अगर फाइल को पढ़ना है, फाइल को पढ़ के उसके अंदर में कितना सारा डेटा है उसके बेसिस पे एक डेटा फ्रेम तैयार करना हो, तो हम लोग कैसे तैयार करेंगे वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली विल गेट each and every files count and based on based on the data. Okay, so basically एक एक फाइल में how many rows are there. Okay, each and every file how many rows are there, that we will see. Okay, so chalo without wasting time, let's go to the workspace and we'll see. So here what we'll use Databricks default file system. Okay, तो डेटाबेस के पास भी डिफॉल्ट कुछ डेटा सेट दिया हुआ रहता है, that thing we will use here. How you will search it? You will search it based on this. Okay, file system already I have told you what is file system. DB utils का जो मैं वीडियो यहाँ पे दिया था, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि फाइल सिस्टम क्या होता है और इस तरह से मैजिक कमेंट लिख के कैसे फाइल सिस्टम के हिसाब से लिस्ट, ls मीन्स लिस्ट ऑफ फाइल्स, तो इसको कैसे देख सकते हो। तो ये सब मैंने ऑलरेडी DBUtils के जो वीडियो है वहाँ पे जाओ, जाके देख लो, वहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। ये देखो ये वाला है DBUtils का वीडियो। ओके, तो प्लीज गो एंड वॉच देयर. There in Python playlist, sorry, in Databricks playlist, you will get all this video. Okay, so please go and watch it. It will be very much helpful for you guys. So coming to our today's topic, so you can see when I'm searching like this, I'm executing the command like this, I'm getting all the files. Okay, in our dbfs folder, in our dbfs. Okay, so these Databricks given files are invisible, you can't see from here. Okay, if I'll go to dbfs, I can see all the files which is here, but can't see this because this is given by Databricks, but we can use it. Okay, so if I'll use this Databricks data set. Okay, so how, let's run it. So database dataset, inner that folder, inner that file, there are multiple folders. Okay, based on the data. So whatever you want, whatever dataset you want to take, you can take it based on your requirement. You can take it. So if I want to take online retail, तो मुझे ऑनलाइन रिटेल वाला डेटा से काम करना है, तो वो इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, तो नो वी कैन रन इट। तो यहाँ पे बस एक ही डेटा का सेट है, तो इससे मुझे काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं और एक फाइल को लेता हूँ। ठीक है, जिस पे डेटा है बहुत सारा, ये कोविड वाला को लेता हूँ। ठीक है, कोविड में बहुत सारा डेटा रहने का चांस है। ठीक है, देखते हैं कोविड में क्या है। ठीक है, so you can see there are lots of covid wala thing. Okay, covid wala thing, so I will take it from here. हॉस्पिटल बेड के ऊपर जो मेरा
डेटा है वो वाला डेटा को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। So now you can see I'm getting lots of CSV file, lots of data in CSV file, okay। तो ईच एंड एवरी फाइल में कितना सारा डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग एक डेटा फ्रेम तैयार करेंगे, ठीक। तो दैट थिंग हाउ विल डू, विल सी, ओके। तो पहले तो ईच एंड एवरी डेटा सेट को यहाँ पे मैं रीड करवाऊंगा, ठीक है। तो हाउ टू रीड द CSV in a single way, lots of CSV file in at a time. So you can see I have used here the asterisk here. So this thing I have already explained in my playlist video, okay। So how to read the data from CSV file, okay। So please go and watch it. So now you can see I have written the code. Now I can run it. So it is fetching the data from all the CSV files, okay। Now you can see here we have almost 22 CSV files, okay। This is not okay, this is I think readme file, this is readme file, this is not, there are 22 CSV files। so 22 CSV फाइल से जितना सारा डेटा है ये यहाँ पे ऑलमोस्ट फेच कर चुका है, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज आवर वर्क, ईच एंड एवरी फाइल में कितना सारा डेटा है, बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू मेक वन डेटा फ्रेम। तो इसके लिए पहले तो मुझे ईच एंड एवरी डेटा कहाँ से आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसको यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास मतलब पाइप पर प्रोवाइड करता है, ठीक है। पाइप पर प्रोवाइडिंग दैट फंक्शन, ओके। तो पाइप पर डॉट सीक्वल डॉट फंक्शन import input file name। तो input file name basically what it used to do, basically input file name, using input file name each and every data from which file it is the data is coming, that you can point out, okay। तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, df डेटा फ्रेम बनाते हैं, वही सेम डेटा फ्रेम बनाने से df डॉट, ओके, एक नया कॉलम इंसर्ट करते हैं जहाँ पे वो वाला रो का डेटा कहाँ से आ रहा है वो वहाँ पे इनपुट फाइल नेम मेथड से वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ column name, what will be the column name, file name, you can keep it as file name, ठीक है। तो now just use the method here, input file name, okay। So now we can run this thing। if I display the display df here, तो df को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। now I can run। So before that if I will see here, there are this much of average ventilator usage, potential increase in bed capacity। So these are the rows, these are the columns, okay। So now we will see another column, sorry there is a issue, what kind of issue it is there, let me check, there is a spell mistake, now it is okay, now we can run, Scorpio is running, ठीक है। तो डेटा पेज हो रहा है, अभी ये ठीक ठाक काम करेगा आई थिंक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे नया कॉलम, ये देखो कौन सा डेटा कहाँ से पेज हुआ है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यू कैन सी फाइल नेम चेंज, डिफरेंट फाइल नेम, डिफरेंट डेटा, ठीक।
ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, now we can perform, now we can perform one operation. So now what we'll do, now हम लोग डायरेक्टली डिस्प्ले करेंगे। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे डेटा को, एक डेटा सेट के हिसाब से डिस्प्ले करेंगे जहाँ पे ओनली फाइल नेम होगा और उसके हिसाब से कितना सारा डेटा है वो काउंट होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये डेटा फ्रेम से मुझे वो फाइल नेम के हिसाब से डेटा को ग्रुप बाई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप बाई किसके ऊपर करेंगे, फाइल नेम के ऊपर, फाइल नेम। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, ईच एंड एवरी ग्रुप बाई ऑपरेशन होने के बाद जो काउंट आ रहा है तो वो काउंट को दे देंगे। तो बेसिकली एक एक डेटा कौन से फाइल से आया है उसके हिसाब से फाइल नेम आ गया। तो फाइल नेम को ग्रुप बाई करने के बाद कितना काउंट हो रहा है, वो जो काउंट होगा वही डेटा का काउंट है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग डेटा काउंट ले जाएंगे। नाउ इफ आई विल पेज द डेटा, नाउ यू कैन सी ईच एंड एवरी फाइल में अलग अलग ये फाइल है, सब कितना सारा डेटा है यहाँ पे देखिए। ओके, so this is a very common and useful real time scenario कि कैसे एक एक बहुत सारा फाइल होगा तो एक एक फाइल से कैसे कितना काउंट है वो कैसे जान पाएंगे। ठीक है, दैट थिंग हाउ विल वी यूज टू will get to know how to know the data count of each and every file. Okay, so I think you have understood the concept. If you like this video, please do like, share and subscribe our YouTube channel Cognitive Coders. Okay, so yeah, I'm daily basis uploading lots of videos, PySpark and database related videos, and also these real-time scenarios are very much useful for interview question preparation also. And if you are a learner, beginner, I can say beginner of the PySpark or database, please watch our database and PySpark series. The playlist is in the video description. Please go and watch it. It will be very much useful for you guys. And also please join our Telegram channel Cognitive Coders. Okay, daily basis I'm giving quiz and lots of updates here. Okay, you will get the updates and you can have daily quiz. Okay, you can participate on quiz also. Okay, so thank you for watching our video. Please do like, share and subscribe. You guys help is very much required for us to grow the channel. Okay, it will be very much helpful for you guys, I can say. Okay, lots of people will get this free content. Okay, if you guys share with them. Okay, thank you for watching our video. Bye.